Good morning, students. Hope you'll be fine in your respective places. In continuation to the laws of inheritance, in the last video, we have studied the law of dominance, where we have studied that the factor that expresses itself is the dominant, while the other, which does not show its effect, is termed as recessive. Now, उससे हमने और भी कुछ कंक्लूजन्स निकाले दैट जो कैरेक्टर्स होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द कंक्रीट रादर दे आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज द फैक्टर्स। उसमें हमने दूसरा ये बताया कि जो फैक्टर्स है दे ओनली ऑकर इन पेयर्स। फिर हमने ये कहा इन द डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील्स इन द डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स one member of the pair it dominates, that becomes the dominant, and the other it fails to appear itself, that is called as the recessive. And today we are going to discuss another second law that is called as the law of segregation. What does this law states? It states that when a pair of contrasting factors are brought together in a hybrid, that is a heterozygous. In a hybrid, these factors do not mix up, but they simply associate themselves and remain together and separate at the time of gamete formation. So what we have studied that when a pair of contrasting factors are brought together in a hybrid, here hybrid simply means in a heterozygous, not homo, in a hybrid, these factors they do not mix up, वो mix up नहीं हो, वो blend up नहीं हो जाते, but वो आपस में साथ साथ रहते हैं and they separate when the gametes are formed. Or we can simply say this that in a hybrid जो टू अनलाइक फैक्टर जो फैक्टर जो होते हैं दे डू नॉट इफेक्ट ईच अदर बट दे कीप देयर आइडेंटिटी। जो फैक्टर्स होते हैं दे डू नॉट मिक्स अप विद ईच अदर बट दे कीप देयर आइडेंटिटी। ड्यूरिंग गिमिट फॉर्मेशन जब गिमिट्स बन जाते हैं दे आर फ्री, वो फ्री होते हैं किसके लिए? टू सेग्रीगेट, टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर एंड देन दे आर रिडिस्ट्रीब्यूटेड, फिर वो रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन। एंड दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ purity of gametes. Now this law can be या this idea or this law of segregation अगर हम बताएंगे it can be understood by means of this monohybrid cross. चलो for example what we will do, we will इन क्रॉस वुड इन जो मेंडल ने क्या किया, ही टेक्स द पी प्लांट, टू पी प्लांट, एक हमने देखा उसकी हाइट टॉल थी, दैट वाज द होमोजाइगस टॉल, एंड अनदर वन जो था इट वाज जो अनदर वन I made them different colors in order to understand that it is the homozygous tall and another one it was the homozygous dwarf. I show it different color. It is the homozygous dwarf, it is the heterozygous, it is the
homozygous tall, and this one is the homozygous dwarf. Now what happens जब हम यहाँ पर देखते हैं, what we will see here, जो gametes होंगे, the gametes that are formed there, they separate T and this T. Now in case of here, this is the T, this is the small t. These are simply the parents, these are the gametes. Now when the gametes fuse together, what we will see here, this and this, they combine together, this and this, it forms T. This and this, they combine together, I will made by this pen black, it forms this T and T. When we combine this and this, they cross with each other. Now again this and this, again this and this. Now here we will see, this is the first generation, F1 generation. Here we will see all the plants जो हमको hybrids मिलते हैं, उनका जो हम phenotype देखते हैं, they are all tall. That is 4:0. That is the ratio tall, and this is the dwarf. It is a phenotypic ratio. Now हम जब genotypic ratio देखते हैं, it is the heterozygous tall. Now when these plants, चलो हम इनमें से एक, this is the F1 generation. When these hybrids of the F1 generation, they are fused together, this tall is crossed with this, दूसरा हम लेंगे tall. Now what will the gametes form there? जो इसके gametes होंगे T, इसके gamete small t. So here we will see the F1 generation, they do not mix with each other, but they simply associate themselves and they remain together. लेकिन जब gametes बन जाते हैं, they separate each other. अब इसके gametes, this T and this T, when we mix up them, what we will see, this and this T, this and this capital T small t, this and this capital T small t, this and this small t. What will be this? It will be the tall. What will be this? It will be the tall, because tall T is the dominant. This, it will be the tall, it will be the dwarf. अब जो हम यहाँ पर phenotypic ratio जो देखते हैं, phenotype ratio, वो है 1 2 3, 3:1. जब हम जीनोटाइप रेशियो देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो में हम ये देखते हैं कि these gametes, they are free to segregate, they are free to separate from one another, and then they are redistributed in the next generation. अब इसमें हम क्या देखते हैं, they are simply associated, वो यहाँ पर एक साथ बैठ, लेकिन जब हमने F2 जनरेशन देखी, वहाँ पर वो फ्री हो जाते, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे आर रिडिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन. अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, दिस इज द होमोजाइगस टॉल. व्हाट इज दिस? इट इज द heterozygous tall. What is this? It is the homozygous dwarf. Now what will be the ratio? 1:2:1. सो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो गमीट्स जो थे,
they do not mix up each other, but in the F2 generation they are redistributed. This is called as the purity of the gametes. Now what we have seen in the first philia generation, जो हमको ये hybrids मिले, वहाँ पर हमने जो इनका जो हमने देखा जीनोटाइप, दैट वाज कैपिटल टी स्मॉल टी. नाउ जब हमने एंड ऑल ऑफ देम आर द टॉल, लेकिन जब हमने F2 जनरेशन में देखा, इन दिस F2 जनरेशन व्हाट आई विल सी दैट देयर वर 3 tall plants and one of them was the dwarf plant. This shows, इससे ये पता चलता है इन द F2 जनरेशन व्हाट वी विल सी, जो gametes थे दे आर रिडिस्ट्रीब्यूटेड, वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते, दे डू नॉट इन द F1 जनरेशन. इस जनरेशन में हम क्या वो देखते हैं, दे आर क्लोजली, दे आर सिंपली एसोसिएटेड, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, दे रिमेन टुगेदर, वो टुगेदर रह जाते हैं. लेकिन जब इन द F2 जनरेशन वो सेपरेट हो जाते हैं, दे शो देयर आइडेंटिटी, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, बट दे आर रिडिस्ट्रीब्यूटेड, they are redistributed in the next generation. This is called as the law of segregation. Now to continue this law of segregation, what we will see in this law of segregation, what we will see here, jo this explains this law that the pair of alleles जो होते हैं, pair of alleles segregate या separate rather from each other during gamete formation, So हमने यहाँ पर क्या देखा, जब gametes बन जाते हैं they separate from each other during the gamete formation, so that one allele will be present in each gamete. So इस गमीट में हम क्या देखते हैं, एक ही एलील मौजूद है, इसमें एक ही एलील, इसमें एक ही, इसमें एक ही. अगर हमने देखा now in this monohybrid cross in the F2 generation both the alleles are present without any mix up, without any blendings. So this law of segregation जो हमको बताता है, it is based on the fact, ये इस fact पर भी मुनहसर है, that each gamete it contains only one allele. This law is based on 4 concepts. इसके 4 concepts. First one, a gene exists in more than one form of an allele. That is, जो gene है it exists in more than one form of an allele. Second, when gametes are produced, जब gametes बन जाते हैं during the process of meiosis, हम क्या देखते हैं, जो allele जो होते हैं they separate, उससे क्या हो जाता है, हर एक गमीट में एक एक एलील रह जाता है, गमीट विद सिंगल एलील. थर्ड जो हम बात करते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है इट इनहेरिट्स 2 alleles for each trait. अब जो 2 alleles होते हैं दे आर डिफरेंट, वन इज डोमिनेंट, अदर वन इज रिसेसिव. जो हमने यहाँ पर देखा, दिस इज डोमिनेंट, दिस इज डोमिनेंट, इट बिकम्स द होमोजाइट, बट दिस कैपिटल T, it is the dominant, while as this short it is the
रिसेसिव। वही हमने यहाँ कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो हम यहाँ पर देखते हैं इट इज द 2 एलील्स फॉर ईच ट्रेट, वो हर एक ट्रेट के लिए दो एलील्स हासिल कर लेता है, गेट्स, एंड वन ऑफ देम इज डोमिनेंट एंड अनदर वन इज द रिसेसिव। सो in short, what we will say about this law of segregation that जो फैक्टर जो होते हैं they do not mix up but they simply associate, वो एक दूसरे के साथ रह जाते हैं and they remain together and they separate at the time of gamete formation, वो gamete formation के दौरान वो अलहदा हो जाते हैं। and this law is simply explained by means of this monohybrid cross. What is the monohybrid cross? जहाँ पर हमने एक ही पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लिया हमने, क्योंकि जो भी उसने मेंडल ने काम किया था यह डन विद द प्योर लाइन, इसलिए हमने यहाँ पर होमोजाइगस टॉल भी ले लिया और होमोजाइगस डॉर भी ले लिया। व्हेन आई फाउंड द रेशो 3:1, लेकिन जब हमने F2 जनरेशन में देखा इट कम्स इक्वल टू 1:2:1। For F1 generation में all of them were the tall but they were the heterozygous tall and the ratio was 4:1. That was this phenotypic ratio. लेकिन genotypic ratio भी क्या आ गया, they were all heterozygous, that also becomes 4:0. लेकिन in case of the F2 generation phenotypic ratio it becomes 3:1 and genotypic ratio becomes 1:2:1. So this shows, इससे हमको ये पता चल जाता है कि जो these what we will see that during the gamete formation जो they are free, the what we see, these factors they are free to separate, to segregate from one another and they are then redistributed in the next generation. This is called as the law of purity of gametes. This was all for today. In the next video we will try to discuss the third law, that is the law of independent assortment. Until then, goodbye, God bless you, thanks.